लास्ट क्वेश्चन के लिए हैंडल कर लो ना इनको, या तो कोई सेव करके रख लेना यार कि ये वाले क्वेश्चन एक डॉग बना लो सेपरेटली, उसमें रख लो आईबी वाला कोई. Sir, it has started. The stream has started. Sure. एक सेकेंड लेट मी जस्ट वेरीफाई. जो मतलब चैट में आ रहे हैं अभी के लिए ना, जो जिनको आंसर नहीं किया, हाँ चैट वाले जिनका आंसर नहीं हो पाया, ताकि वो लास्ट Q&A सेक्शन में आंसर हो जाए. जैसे कि अभी ये वाला था ना कि वी आर न्यू हाउ डू वी स्टार्ट, वो वाला जो क्वेश्चन हो गया उसके नीचे वाले देखते रहो, अभी उन सभी को आंसर नहीं कर पाएंगे. So we are starting. ठीक है. आई डोंट थिंक ये वर्क कर रही है, लाइव स्ट्रीम नहीं वर्क कर रही है. सर वो थोड़ा डिले रहता है. ठीक है तो जस्ट स्टार्ट. हाँ 99 है यहाँ पे. कुछ लोग और अगर दूसरी कॉल को ज्वाइन कर सके तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा. 10-20 लोग उस वाले को ज्वाइन कर लो. मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ इसके बाद में. फ्रेशर्स के लिए सेशन शुभम ये ना बिल्कुल फ्रेशर्स वाला सेशन होने वाला. बेसिक्स पे हैंडल करेंगे सारा कुछ. हम जितना हो सकता है उतना सिंपल रखने की ट्राई करेंगे. कहीं पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स सा लगे बता देना. हाँ एग्जाम्स वगैरह नहीं होते कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह के ना, अपनी पेस पे करते हैं. अभी हम लोग कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं 3rd और 4th ईयर मिलके, तो उसमें भी कोई टाइमलाइंस नहीं होती. अपने हिसाब से कर लो. तुम्हें आज इस हफ्ते अगर तुमसे छूट गया, वैसे तो हम अपने एंड पे टाइमलाइंस मेंटेन करते हैं, बट अगर वो नहीं हो पाता तो फिर नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिया. कुछ फिक्स नहीं है, अपनी आराम आराम से करते चलो. और वो कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा काउंट करते हैं कि जब तुम कर रहे हो, क्योंकि दिस इज एज क्लोज टू कंट्रीब्यूटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज यू कैन गेट. तुम एक बड़ी कोड बेस पे छोटा चेंज भेज रहे हो, बट एक्चुअल जॉब में वही करना पड़ता है. एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा कोड बेस होगा, उसमें छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन भेजने पड़ेंगे. मिड सेम्स, हाँ अरे इसके लिए बना के रखा है मिड सेम्स के लिए ना. मिड सेम्स में जो होता है, मिड सेम्स या तुम्हारे एंड सेम्स वगैरह होंगे, उसके अंदर प्रीवियस ईयर वगैरह वाली चीज़ आएगी. हाँ ऐसा करो काव्य ना, स्टार्ट कर लो. बस एक लास्ट चीज़, मिड सेम्स वगैरह में प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए इसीलिए हमने रेपो बना के रखी हुई है. लीव करके सेकंड वाली मीट ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कर लो तो सोर्स फॉर लर्निंग पाइथन. वो रिसोर्सेज जो शेयर कर रखे ना, वहाँ पे देख लोगे तो वहाँ पे लिस्टेड आउट होंगी सारी चीज़ें. कुछ लोग जो मशीन लर्निंग जिन्होंने करी हुई है, वो भी वहाँ पे मेंशन कर रखा है उन्होंने कैसे करी है. सर जो मिड सेम का पूछ रहे थे, शायद ये सॉफ्टवेयर का ना पूछ रहे हो, क्योंकि इनको शायद ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि हमारे समय भी बताया नहीं था हमें ज़्यादा. मिड सेम्स का ना यार, पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, आधी बार तो 70-80% जो पेपर होता है वो वहीं से उठ के आता है. क्विजेज वगैरह होंगे वो तो देख ही लोगे, असाइनमेंट्स तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, क्लासेस लगा लो, हो जाएगा वो तो. लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आधी बार तो यहाँ पे जो तुम्हारे सीनियर होंगे वो तो आराम से बता ही सकते होंगे. मेरे को तो खुद 4 साल हो रखे, तो वो ये कि प्रीवियस ईयर पेपर करके चले जाओ एक हफ्ते पहले लास्ट में, तो भी हो जाता है. बट CG पे ध्यान दो, इसमें दूसरी चीज़ों में मत फंस जाना. CG करो, DSA करो, फिर डेवलपमेंट वगैरह भी ट्राई करो. अपना कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकते हो. आते जाओ दूसरी वाली में. सनिल भी शिफ्ट हो गया, ठीक है. अगर बाकी लोगों पे लिंक नहीं होना, या मैं एक बार शेयर कर देता हूँ वापस, अगर कुछ लोग शिफ्ट हो सको तो. So start कर दें. हाँ you start. Okay. So hello everyone, warm welcome to all the freshers, as we are eagerly waiting to know you all. So welcome to this whole new world. I hope you guys are doing pretty well in these times. So like the open source division of PEC ACM CSS presents to you its introduction to open source workshop. My name is Kavya Rishi and I'm currently in second year computer science department, and here are Manjota and Ashutosh with me. Yeah, so hello everyone, I am Manjot from second year CSC. Hello everyone, this is Ashutosh and I'm also from second year CSC. Yeah, wonderful. So let's get started. So the very first question is, what are open source software? So open source software is a software that is distributed with its source code, making it available for use and modification and distribution with its original rights. So the copyright holders of such software allow the users to use it and like do some valuable modifications in its source code to add some new features, to improve the existing features, and to like fix bugs if there are any. The difference between open source software and like the proprietary software is that open source software is open for free use and like open collaboration, whereas proprietary software is copyrighted with no open access and like limited flexibility.
So these are the examples. Open source software is include VS Code, Mozilla Firefox, VLC Media Player, and proprietary software are like Windows and Instagram. Moving on. So here are some popular open source programs. These are the one of the few programs which like support the open source community and like promote the open source culture. So the very first is GSOC, Google Summer of Code. It is a program started by Google and has like completed 16 years. First, the organizations apply to Google, and after the organizations are selected, then the students apply to the organizations. Second is DigitalOcean Hacktoberfest. The main idea over here is that there is no such thing as selection criteria in this particular program. So like it is pretty like it is very useful for individuals in particular who are just starting out with open source. So you guys can like look into this. And the third is Outreachy. Outreachy provides internships in like open source to people that are underrepresented in the technical industry where they are living. It is a 3-month internship program. And the special thing about GSOC and Outreachy is that, these programs provide you one-to-one mentor-mentee relationship. Like you can interact with the best among the best developers who are like working in the open source community. And the fourth one is Google's Season of Docs. It is a pretty new program by Google where technical writers and open source organizations come together and like work on open source projects. So now a valid question arises in all of your mind is like, what are the benefits of open source contributions? So the very first benefit is that you get to code for real world open source projects, and it like refines our existing knowledge of programming and also helps us to like learn new skills. And many open source projects offer mentorship programs to like guide and help us through our very first few contributions. And we usually we need not develop the whole thing from scratch. We just have to like fork our favorite projects and start experimenting with them. I know you might be hearing some new terms here, like just wait for it. We'll be like explaining everything. And after making any open source contribution, we get like an immediate feedback regarding our developmental work. While doing open source contributions, we interact with like-minded developers from all over the world and like build connections along the way. So like as we get more closer to the open source, know much more about our field of interest and like other related fields. So like the most important aspect of open source contribution is like it may help you fetch in like a job in your field of interest. So I'll be handing over to Manjot. Kaveh, can you continue? I think Manju just left the meet. Yeah, I left. Okay. Manjot, do tabs, not like don't share your whole screen. No problem. So I hope my screen is visible to both the meets. Yes. So I know that all of us are eager to contribute to open source, but before we start contributing to open source, we need to get some basics clear. And that's where Git and GitHub come in. Git and GitHub is like the most basic of the knowledge that you require before you start contributing to open source. So most of you would be wondering, what exactly is Git? So in simple terms, Git is a free and open source version control system. Now, what do I mean by version control system? A version control system is mainly a software that tracks whatever changes you make in your project and keeps a history of them and stores those changes in a repository, which is locally present in your system. So, for example, I make a new file
and commit those changes. Commit mainly means that those changes are saved in the repository and are like kept in the history of that project. So I can add a file, make a commit, that is save it to the repository, then maybe add another file or make some changes to the old file, then make another commit, then further add more files. So in this way, I kind of start making different versions of a project. And each commit kind of represents one point of time in a project's full lifetime. So what this helps is it allows us to keep a track of whatever changes we have made to our project. And moreover, if we want to revert any changes that we have made, we can do it at any point of time. Moreover, you can, whatever changes you have made, you can easily merge those changes with any of your colleagues' changes without any manual hassle that you would have to go through in case you don't use a version control system like Git. And obviously, one of the major advantages would be usually what would happen if you have a project with different versions like version 1.1, version 1.2, and so on. You would have to keep different folders to maintain each of the versions. But using a Git repository, you can simply save the changes that were present in version 1.1 and the changes present in version 1.2. So instead of keeping different folders for each of the different versions, all you need to do is maintain a Git repository. Now that pretty much is like the basic of what is Git and what is the version control system. Now moving on to what is GitHub. Now I want to make it clear that Git is completely separate from GitHub. While Git is present locally on your system, GitHub is hosted on the web. Now, what is exactly is GitHub? GitHub is a hosting service. A hosting service for the local repository present in your system. What you can do is you can push the local repository present in your own system to a remote repository on GitHub. And what this allows is that the remote repository present on your GitHub account on the web can be accessed by any person in the world. So what they can do is they can open your code, learn from it, maybe make a copy of your project and maybe modify in any way they want. Or what they can do is actually contribute to your project. And that is exactly what you can do to any other person's project. So what usually happens in a development environment like this is that a person, for example, user A has Git on his system, has a project. He makes changes to that project, commits those changes, and pushes those changes from his local repository to a remote repository on GitHub. And what a user B or user C who also wants to work on that project can do is that simply he can pull the changes present on the remote repository into his local repository, and those local on pulling those changes, those changes will appear on his local repository. So what this helps is create a collaborative environment in which people from different corners of the world can work easily with each other and learn from each other. Now I'll get back to GitHub in a minute, but first I'll want to go through some of the common Git commands. For example, Git checkout, which is usually used to create a different branch. Then is Git add. Git add mainly means that you are staging whatever. Sorry, you are staging whatever files you want to track by Git in a particular commit. Then is Git commit, as I explained earlier. Commit mainly means saving the changes you have made to the local repository. And usually we accompany a message with commit to specify whatever changes we have made in that particular commit. Then comes Git push. Git push is pretty easy to understand. It mainly is that whatever changes are present in your local repository are pushed to your remote repository, like what we did earlier here. User A made changes, committed them, and pushed them to his report repository on GitHub. And pull is like the reverse process of it. Whatever changes you have made, whatever changes are present on the remote repository, you pull those changes into your local repository.
So I would like to give some idea about GitHub more using our PEC CSS open source repository. So this is a typical sorry, this is a typical GitHub repository. Usually when you open a GitHub repository, you will find these two files are like very common. A get ignore file mainly contains whatever files we don't want Git to track. And then is a readme file. Readme file usually contains the description of that repository, what that repository is about. For example, our PEC CSS open source repository is about collecting various resources for various computer science fields. And what else you will have is a bunch of contributing guidelines. These guidelines you need to follow if you want to contribute to a particular repository. So what is the aim of our open source repository is to keep a storage of resources of various different computer science fields. For example, you can find a lot of resources here, like of app dev. These are all resources contributed by people of our college and even from outside our college. Here is Ashutosh. We have been collecting resources for like the last 2 years. So Yes. For 1 second, just is there any doubt about Git or GitHub till now? I know it's a bit confusing. Thoda ho jata hai. Even for seniors, it took a lot of time to learn about version control properly. It's very important when you're working for a software development project or anything remotely related to that. तो उसमें Git तो use होगा ही होगा. So किसी को doubt अभी तक? Any questions? Just think of Git as version control. Version control is basically maintaining different versions of the changes you are making. Or repository just a file with your changes. उस फाइल में तुम्हारी फाइल्स डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, तुम्हारे कोडिंग वाली जो फाइल्स होंगी वो पड़ी होंगी वहाँ पे, उसमें चेंजेस करोगे. रेपो होगी, रेपो में वो फोल्डर ऑनलाइन तुम्हारा गिटहब पे आ चुका है वो, एंड ऑल ऑफ योर अदर टीममेट्स कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू दैट. उसमें गिट तुम्हारी हेल्प करता है टू कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली टू अ प्रोजेक्ट. तो वहाँ पे गिट आता है. यू विल नीड टू लर्न गिट. अगर तुमने अगर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का तुम्हारा मन हो तो उसमें तो चाहिए ही होता है. For this particular repository, if you see, we have been collecting resources for quite a while. So the one you currently see on your screen is for Ajay. So Ajay, as I told you, he cleared GSOC in 2021. So he was part of an organization which uses Flutter, and he made an app with them. So these are the resources he used. We also have a LinkedIn link. Can you open that? His LinkedIn. So we linked everyone who provides resources. We linked their LinkedIn profiles, so you can go and verify whether these resources are credible or not. If they have already some sort of decent experience working for an organization, particularly using those resources. So you can, as you can see, he worked for GSOC, he worked for Girl Script, and he's also a Microsoft Learn student ambassador. So quite a lot of achievements. In just a few years. Suppose I want to make an Android app, then anyone can help me in that project. Yeah, exactly. That is the whole concept of putting your projects in open source. So you put your code out there. Anyone can look at it. If you want contributions, or if you want to highlight the project in your resume, then you would have to add a link to your GitHub repo where you put that project. So can you just so you can directly get contributors or work as a team on a particular project. So that's the whole concept of open source. Plus there are a lot of different repositories as well as different open source projects. One of the common one you might have heard of, or the most popular one, is Linux. Linux is an open source operating system. So your screen is being shared. So can you just move back to open source repository? Yeah. So in this repository, we have different resources for different skills. So if you want to learn machine learning, you can directly go
and check that folder out. For open source, we have specific for PEC courses, web dev. I think the live stream is up now. No, that's facing some issues now. So we have app development resources, blockchain, CP, and DSA. Can you open the CP DSA folder? Live stream is up if anyone wants to just go and directly watch that. So in this resources, you might have already heard about the field of competitive programming. People use this to improve their question solving abilities, the questions that are specifically asked during your interviews. So for that, there are quite a bit of resources added. I want to highlight a specific one. Can you move to Ankit's resources? So Ankit is one of his seniors. He's also, I think, the CodeChef chapter head for ACM. He's currently placed in Apple. So you can see the resources that he directly used to learn competitive programming or DSA. So this is what this particular repository provides you. Can someone share the link to this repository in both weeks? So this is something amazing that we've been working on for a while. Plus, we have different people. You can directly check their LinkedIn profiles, or if their resources seem like something you might want to follow. So I think that is it for our open source repository. You can also contribute your own resources if you want to, but I don't think you might be that skilled at this moment. Some more questions. I think a repository link has been shared. Yeah. So you can just go through, browse it, see what you like. What you can do is, can you move to the home of the open source repo? You can directly start it. This is something we call starting a repo is like bookmarking it in terms of GitHub. Or if you want to contribute, what you will need to do is fork it. There's a button right next to the start button. Once you fork it, you will be able to create an exact copy of this repo into your own profile, and you can make any changes you want to in that particular repo. We'll be moving on to that particular section. I think Git and GitHub must be clear by now, a little bit even though. Can you show the commits in this particular repo? I think that would make a lot more sense. So as you can see, there are several different commits. A commit represents a particular change that you've pushed into the particular repository. Any change you make can be viewed by other people. And as you can see, a lot of these changes have been verified. So the repository admin or the repository owner will verify those changes. And only then those changes can get merged into the main repository. Can you click on the arrow buttons just right next to a particular commit on the right side? Right. Yeah. So once you click on this button, you can see the state the repository was in when that particular commit was pushed. So you can that's what Git offers. You can visit the entire history of a particular project. So let's say you were working for a big organization like Google. You can see how they started that project, what changes did they push in that particular project, and you can even make branches from that particular project. A branch would be to make a deviation from the main project and keep your changes contained in a particular branch. So that's what a branching facility offers. There's a lot of different complexity involved in version control. That's why people use this, because it offers a lot of functionality too. Let's move back to the presentation. Yeah. So the commands that we listed were specific. If you want to directly use commands, or you can use VS Code if you want to. VS Code directly provides you buttons or different commands that you can use. You don't need to learn every single Git command to directly start contributing. We have different videos linked in our open source README file, which you can view if you want to learn how to contribute directly to open source repos. Let's just start with this. I think by now you understand what the purpose of our open source repository is. It's filled with resources, whatever you need to learn. Go on, Manjut. Yeah, so I guess this we have already discussed that besides resources being available to everyone, anyone can contribute to the resources. And obviously, some of you might not have such good resources right now because you are just in the beginning phase. But surely when you are on a more expert phase comparatively, then you might be able to share whatever good resources that you end up finding. So now the next question is where to find open source projects.
Now, these are some of the big open source organizations that you can find, like 52 Degree North, Aussie, Chromium, Django, Python, TensorFlow, GitLab. These are some of the big open source organizations, and they have many open source projects that you can go and look up on their website or their GitHub repositories and GitHub organizations. So besides these, what you can do is you can go to the Google Summer of Code page and look at the past programs. Like I said earlier, Google Summer of Code mainly involves sorry mainly involves open source organizations applying for recruiting open source contributors. So these are some of the open source organizations. Definitely not all the open source organizations. There are many more. These are some just apply to the 2021 program of Google Summer of Code. So what you can do here is you can open any of the organization and you can easily look at the tech stack that they have followed. Moreover, whatever ideas they have implemented during their project, and look at their project as well. And you will get a list of the contributor as well. This is Ajay sir. Uh, he's one of our seniors, and you must have already heard his name. He's one of the first to go get selected in GSOC. And besides that, you can go to open source repositories and look for. You can easily go to GitHub and explore different open source repositories that exist already on GitHub. There are tons of them, and I will just show you one or two of them. The very big ones like Dogecoin. I think you all are aware about the famous cryptocurrency Dogecoin. So this is the open source repository, and you can see that there are like 13,000 commits and approximately 250 contributors in this repository. And other than that, what I want to show you is that TensorFlow repository. TensorFlow is a machine learning library in Python, and you can see it has approximately 124,000 commits and approximately 3,000 contributors. So that is how big the open source community currently is. And any of us, even you can go on and contribute to these repositories. Make a pull request. We will talk about how you can make a pull request and what exactly it is. Can you show the issues for now? Click on the issues. So there's a specific tag that they use in the label section in the top label filter. Can you filter out by good first issues? I hope they have this good first issues. Yeah. So this particular issue, it's throughout used in open source. This is specifically for people who want to make their first contributions. So once you learn about a particular project, go and find a good repository that you want to contribute to, filter out by good first issues, and they probably have listed out what you exactly need to do. It's usually for beginners. As you can see, I think someone might have fixed it already, but this is what you can do. There's a link if you want to directly. Yeah, people make pull requests directly, link them to this. Once the changes get approved and get merged, they've made significant contributions to a bigger project. So open source contributions can be the highlight of your resume. Instead of making a simple software or simple project website or app from scratch, you can make a contribution to a bigger organization, and that can be pretty valuable in a resume for a beginner. Yeah, so I think you have some idea about what the issues are about, and I would like to give you a brief about pull request. So pull request mainly means whenever there is an issue in a repository or any contribution that you want to make, after committing your changes in a forked repository, for you to merge those changes to the original repository of the organization, you need to make a pull request. And for that, Ashutosh will give you a brief. So, So, hello everyone. This is Ashutosh, and
I think now most of you have now known what GitHub and open source is. So let's see how implementations are done. So prerequisites are to have a text editor, and we recommend VS Code. It's a really good text editor, and तुमने काफी सुन भी लिया होगा इसके बारे में कैसे काम करता है. But we'll see how powerful it is, and we also need Git in our local. So let's get started. How to make a pull request. So to make any contribution, we have to create a pull request in the repository. So let's see how we can do it. First of all, we have to fork the repository into our account. So forking is done first. The second step is to clone the forked repo into the local system. So जो repo हमने fork की थी उसको हम अपने local system में clone करते हैं. Second step ये हुआ. Third is to code and change whatever we want to make. तो third में हमने code करा and then we commit those changes, and after committing we finally push those changes into our account and that repository that is in our account, and then we create a pull request, and then the moderator जो भी होगा they can merge those changes. So let me show you how we can do this. So currently I am on PEC CSS open source repository. You can see now there is an option to fork the repository. See here. So we'll just fork the repo, and I've already forked. So I'll just move towards my account. So you see, this is my version of the PEC CSS open source repo, and I can do whatever I have to do in this repo. And second thing is to clone the repo. We have seen how to fork. Now second step is to clone the repo. Now there are multiple options to clone a repo. We can either download the zip file. We can either use GitHub Desktop. It's and it's an application through which we can do. And for now, I'll be showing you how we can do this in command line, in this command prompt. So you can do any of these, and I'll show you in the command line. So first of all, you just select the HTTPS version of the link of this repo, and I'll just copy it. Make sure you're copying your version of the open source repo. कई बार confusion हो जाता है, and we just select this one. इसको नहीं करना है, अपनी वाली repo को करना है जो हमने fork की थी. Okay. So I've copied the link from here, and now move towards the file where you want to keep this repository. Open the command prompt. I used Windows terminal. It's same as command prompt. And now the command to clone this repository into my local is, see carefully, git clone, and then the link that I've copied. So git clone and this link, and now you'll see ये मेरे local में copy होने लग जाएगा. Is the open source repo that was in my account. तो ये यहाँ पे मेरे local में अब copy होने लग गया है. You see it's cloned. Now to open this in VS Code, there is a shortcut. Let me tell you the shortcut. It is code and then the repository's name. So वो है open source, and I'll just press tab to autocomplete. तो ऐसे करने से मेरे VS Code में खुल जाएगी. Although you can open it anyways, but I'm just telling you a shortcut. Code and then this repository name. So now you can see मैं अपने desktop environment में पूरी repository ला गया हूँ, and now I can do any changes I want to in this VS Code text editor. You can see all these files for folders: app dev resources, blockchain, CPDSA resources. Okay, so now we'll see how we can create a pull request. First of all, let me show you issues. So for issues, we'll move towards PEC CSS open source repo. And here are multiple issues. You can solve any of these good first issues. Many are closed, but I've opened a issue for demonstration purposes. So here's the issue. See carefully. It's a very easy thing. We have to print hello world, and this states that. Now let's move towards the VS Code text editor, and I'll create a file in, let's say, good first issues, and I create a new file. It is by the name hello world.py. I'll code in Python. You can use any language, and
Now I'll just write print hello world. Very basic, and things are not just basically like easy as this. इससे tough होते हैं, but just for demonstration I'm showing you. So let me show you how beautiful this VS Code text editor is. Here is the tab. Here are all the extensions that we can use in VS Code. Source control is one of them. और ये preloaded आता है VS Code में, so you need not to worry about how to install this source control. So ये source control में तुम जाओगे, you'll see an option. You'll see your file here, helloworld.py. Okay. So ये भी green हो चुका है यहाँ पे. You can see it. ये green हो चुका है. And यहाँ पे एक U लिखा हुआ है. It means untracked. कोई भी फाइल untracked तब होती है until or unless it's not tracked, या फिर जब तक ये add नहीं हुई होती है. So सबसे पहली चीज हमको इसको add करना है. So VS Code में there is an option to add. यहाँ पे प्लस का बटन आ जाएगा. तुमने क्लिक करना है and then the file will be staged, or rather I can say added. ये add हो चुकी है. So हमने add कर दिया है. Now we have to commit this change. So add करने के बाद हमें हमेशा अपनी changes को commit करना होता है. Now see कैसे करना है. यहाँ पे अपना जो error था, okay, जो issue था, उसका एक कोड होता है हमेशा. तो इस कोड को हमने कॉपी करा. ये कन्वेंशन ऐसा कुछ है नहीं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू. जो भी एरर था उसका कोड होता है, उसको कमिट मैसेज में डाला एंड वी कैन राइट एरर रिजॉल्व. ये चीज ना गुड प्रैक्टिसेस में आती है. अगर तुमने इश्यू का अगर जो भी कोड था वो तुमने मेंशन कर दिया, तुम्हारे जो भी कमिट मैसेज होगा या पीआर में तुम्हारा टाइटल होगा, तो इट्स इजियर फॉर द रिव्यूअर टू एक्चुअली गो थ्रू द पीआर. क्योंकि इश्यू लिंक होगा तो वो वहां चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल इश्यू क्या था और तुम्हारे चेंजेस उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So now that you have written the commit message, इसके बाद हम commit directly यहाँ से कर सकते हैं. ये यहाँ पे commit का option आ गया है. We can commit this change, and as soon as we commit this change, we can see sync changes option. It means you can see यहाँ पे green से या पूरा white हो चुका है. It means our file has been committed. इसके बाद we have an option to push this file into the remote repo. Origin main अपना remote repo है. ये PEC ACM वाली नहीं है, ये मेरी वाली है जो मैंने fork की थी. So I'll just push it. And it was an good first issues में थी. Now you can see good first issues में एक hello world करके फाइल बन चुकी होगी. See hello world.py ये बन चुकी है, ये अभी बनी. एंड यहाँ पे जो कमिट मैसेज आएगा, राइट, यहाँ पे जो कमिट मैसेज आएगा, यू कैन सी, इससे हम डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं PEC CSS की ओपन सोर्स रेपो में. यहाँ पे वी कैन सी जो हमने इश्यू किया था उसके रिगार्डिंग मेरा आ चुका है, बट स्टिल पीआर इज नॉट बीन क्रिएटेड. पीआर बनाने के लिए हम अपनी रेपोजिटरी में आएंगे जो हमने फॉर की थी. यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके सेक्शन होगा, हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का. So I'll open the pull request. If we are able to merge, so हम create कर सकते हैं pull request now, and I'll create a pull request. Pull request is basically you submitting your changes. तुमने change अपनी forked repo पे कर ली है. अब तुम main वाली जो repo थी जहाँ से तुमने fork करके लेके आए थे, वहाँ तुम push कर रहे हो कि अच्छा ये वाले changes हैं, जरा एक बारी ना check कर देना. तो वो pull request के लिए अब तुम title बोलोगे कि टाइटल ये था, ये वाला इशू फिक्स किया है. अगर थोड़ी बड़ी पीआर होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा तुम्हें कि अच्छा ये सब कुछ किया था, तुमने 5-6 फाइल चेंज करी हैं, रीजन क्या था, वो सब कुछ लिख सकते हो. और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर तुम टाइटल भी जो तुम्हारा पीआर का इशू का जो टैग नंबर था वो तुम टाइटल में मेंशन कर दो. पीआर के कमिट्स में तो करे ही है, दैट्स गुड, बट अगर टाइटल में भी मेंशन कर दो तो भी बढ़िया. And in the description you tell what you have done in the PR, in the commit. So ये सब करने के बाद टाइटल एंड गिविंग द कमिट मैसेज देने के बाद यू जस्ट क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट. एंड हियर वी गो. अपनी जो रेपो है ओपन सोर्स, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ पुल रिक्वेस्ट. यू कैन सी 410 issues solved and it's opened by me. So that's how we can create a pull request. So now Gaurav sir will tell how we can merge the pull request. हाँ, मैं दिखाता हूँ. So
जस्ट 1 सेकंड, इसमें भी शेयर करना पड़ेगा। सर चेंजेस पुश होनी चाहिए थी ना, मतलब पुल क्यों करी हमने वो यहाँ पे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पुल रिक्वेस्ट टर्म्स में उतना मत फंसो एकदम से कि तुमने बस सबमिट करने हैं चेंजेस, तो तुमने पीआर क्रिएट करनी की पड़ेगी, पीआर पुल रिक्वेस्ट होगी। तो ये देखो अब जैसे ही कोई भी कंट्रीब्यूटर होगा, अब रेपो का एडमिन होगा या फिर एडमिन एक्सेस जिसके पास भी होगा, उसके सामने पीआर आ चुकी होगी। अब आशुतोष ने भी चेंजेस पुश करे थे, तो मैं चेक कर सकता हूँ जाके, अच्छा इसने ये करा था, इशू ये वाला सॉल्व किया था। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, यहाँ कहाँ पे होता है इश्यूज वाले सेक्शन में, लिंक्ड इश्यूज, अभी कोई लिंक नहीं हो रखा है, बट वंस आई गो टू दिस, अब मैं चेक कर सकता हूँ, अच्छा 410 था, तो मैं यहाँ पे 400 एडमिन जो होगा खुद लिंक कर देगा। इशू लिंक करने से क्या होता है कि जब पीआर जब ये क्लोज होएगी, जब मैं इसको मर्ज कर दूंगा, तो इशू भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। एडमिन्स वगैरह ओपन करके रखते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स इनवाइट करते हैं वो थ्रू इश्यूज, और जब वो सबमिट हो जाएगा तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब रिव्यूअर्स में सजेशन आ रहा होगा, मैं बाकी लोग भी रिव्यूअर्स में ऐड कर सकता हूँ, ऑल इन कर दिया, भावेश कर दिया, तो अब ये लोग भी आके रिव्यू कर सकते हैं पीआर को। बट अगर चेंजेस कैसे रिव्यू करते हैं, मैं फाइल में जाऊँगा, मैं चेक कर लूँगा, अच्छा ये चीज़ थी, फिर इशू जो होगा, लिंक्ड इशू जो होगा, वैसे तो यहाँ से भी दिख रहा है मेरे को, मैं वो खोल के देख सकता हूँ कि अच्छा ये इशू था, एग्जैक्टली ये चेंजेस करने के लिए बोला गया था, फाइल में ये चेंजेस हुए थे, तो अप्रूव कर देता हूँ मैं, चलो मेरे को ठीक लग रहा है, सबमिट कर दिया, तो अप्रूव हो चुके हैं एक बंदे की तरफ से। यूजुअली थोड़े सोफिस्टिकेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें तुम्हें 2 या 3 लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है, तो वी ट्राई टू वो सिमुलेट दैट। अपने प्रोजेक्ट्स में करा था, ये वाली रेपो हमने अक्टूबर फेस्ट के लिए यूज़ करी थी। तो उसमें अक्टूबर फेस्ट में क्या होता है कि थ्रू आउट अक्टूबर जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो अलग अलग रिपोजिटरी में जाते हैं वो लोग, स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए ओपन करते हैं नए नए इश्यूज़, क्योंकि इश्यूज़ क्रिएट करने में भी टाइम लगता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना सिंपल चीज़ों को। तो वो हो गया, चेंजेस अप्रूव हो गए, जो भी उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूजुअली क्या होता है कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, अभी हमने कुछ लगा नहीं रखे, गिटहब एक्शंस के थ्रू लगा सकते हैं टेस्ट, ताकि कुछ भी नई फाइल आ रही है तो अगर कुछ कमांड्स रन करनी होगी चेक करने के लिए कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है कि नहीं करती, तो वो एक बार इंश्योर हो जाएगा। वंस दैट इज डन, तो यहाँ पे स्टेटस शो हो जाता है, यहाँ पे टिक आ जाएंगे, जैसे अप्रूवल आ चुका है, अब 2 पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है, लेकिन मैं मर्ज कर सकता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दिया, कंफर्म मर्ज, तो अब ये चीज़ मर्ज हो जाएगी, मर्ज हो गया। यहाँ पे ऊपर तुम्हें दिख जाएगा ये वाली पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई थी, आशुतोष ने जो बना रखी थी, एग्जैक्ट नंबर वगैरह भी आ जाएगा, और जब फोल्डर में जाके चेक करोगे तो हो जाएगा। अभी तक सिंपल था, समझ आया सभी को? एनी डाउट्स? दोनों सर वो नंबर 411 कैसे हो गया 10 के बाद? नंबर्स पे इतना मत देखो, नंबर वो अपने आप ना वो चेंज होते रहते हैं। नंबर जो इंडिकेट होता है ना वो होता है कि कौन सी कितने सारे इश्यूज आ चुके हैं, जैसे ये दिख रहा होगा इश्यूज आ चुके हैं, बस ट्रैकिंग नंबर है, उसको मत देखो। वो प्रीवियसली पहले की बनाई हुई थी, उसको मत देखो, अभी जो अच्छा, लेटेस्ट थी वो 400। मैं समझाता हूँ हुआ क्या, उसमें 410 थी, वो उसको छोड़ो अभी यार, वो उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी तक क्लियर हो पा रहा है? यस मतलब चेंजेस सबमिट हो गए, पीआरस बनानी सीख ली, गिट सीख लिया, गिटहब सीख लिया। गिटहब काफी इंपॉर्टेंट है, जाओ अपनी यहाँ पे अपना एटलीस्ट अकाउंट बना लो विद एवरीथिंग, जो भी सोशल मीडिया में होता है। तो तुम्हें क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे जाना, अकाउंट बना लिया, धीरे धीरे करके सीखोगे, जितनी जल्दी अकाउंट बनाओगे उतना बेटर है। लिंक्डइन बना लो, गिटहब बना लो, एटलीस्ट जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू करो प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि अभी नए हो, क्या पता कुछ करा ही ना हो, तुमने जेई वगैरह फिनिश करके आए हो, आओ खोलो एक बारी, चेक करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अभी शायद तुमने एक भी लाइन का कोड लिखा नहीं होगा, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो जाके कि अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे था। अभी एक टाइम टेबल प्रोजेक्ट देख रहे हैं हम, अभी प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट वही है स्लाइड्स में, धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। टाइम टेबल प्रोजेक्ट हो गया, तुम देख सकते हो अच्छा प्रोजेक्ट में फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्यों बने हुए हैं, फोल्डर जाके चेक करने हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ है कि तुम जाके देख सकते हो अंदर तक कि वर्किंग कैसे हो रही है, सब कुछ ओपन है, तो कोई भी जाके देख सकता है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जाके देख सकते हो, गूगल की एक एक्सटेंशन है क्रोमियम, वो देख सकते हो, जो VS कोड है। इवन मैं अपना एक बार सेटअप दिखाना चाह रहा था, ये एक प्रोजेक्ट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, 3rd और 4th ईयर मिलके कर रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 4-5 मंथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तुम, काफ़ी आराम से सीख सकते हो। तो VS कोड जो है ये यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट के अंडर ही पड़ता है, विजुअल स्टूडियो कोड, बट इसका एक ओपन सोर्स, क्योंकि ये पहले से ओपन सोर्स है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको फोक कर सकते हो और उस पे नए चीज़ें वर्क करनी शुरू कर सकते हो। जैसे अगर लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है, तो उस पे जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादातर चलती है, जिसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होगी उबंटू।
वो फोक्ड है, लाइनक्स वाला वर्जन जो हो गया उसी का, उसको यूज़ कर रहे हैं मेन। तो जैसे कि मान लो अगर आशुतोष ने ये सेम प्रोजेक्ट उठा लिया, फोक कर लिया, उसने यूज़ करना शुरू कर दिया, इसने और रिसोर्सेज डाल दिए और लोग उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। तो वही है कि ओपन सोर्स में ऐसा करा जा सकता है। कुछ लाइसेंसेस वगैरह होते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। लाइसेंसेस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। लाइसेंस में उतना नहीं होता, यूजुअली वो रेवेन्यू वगैरह वाला कुछ होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वही है। अब VS कोड का एक दूसरा ओपन सोर्स वर्जन भी है जो थोड़ा फीचर्स वगैरह में थोड़ा आगे चल रहा है नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड से। ये स्पेसिफिक फॉर डेवलपर्स है तो वो लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन देख सकते हो, ये वाली कितनी सही चीज़ थी, ये गेट वाली, तुम्हें कमांड से याद नहीं करनी पड़ती। कमिट कैसे करना है, पुल कैसे करना है, पुश कैसे करना है, अपने आप आराम से हो जाता है, सिर्फ एक गेट क्लोन याद करना पड़ा था। होपफुली अभी तक क्लियर था यहाँ तक। हाँ, गिटहब का एजुकेशन वाला पैकेज होता है तो उससे गेट फ्री प्रीमियम वर्जन स्टूडेंट्स को मिल जाता है फ्री, अगर तुम्हारी वो ईमेल आईडी यूज करोगे जो कॉलेज वाली ईमेल आईडी है तो। अभी तक क्लियर लग रहा है? कोई भी माइक ऑन करी बोल, बताओ बताओ। सर बेसिकली फिर गिटहब ये सब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और कोऑपरेटिव तरीके से काम करने के लिए है। हाँ एग्जैक्टली, सारी कंपनीज गिट तो यूज कर ही रही है बट तुम क्या कर रहे हो, गिटहब कुछ लोग गिटहब यूज करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है बिटबकेट। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम रिपोजिटरीज, सेम पुशिंग पुलिंग पीआर्स क्रिएशन। कंपनीज में यही होता है, इंटर्नशिप पे जाओगे यही करना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ तुम पहले सीखनी शुरू कर दो, पीआर्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए रेज्यूमे पे लिखने के लिए मिल जाएगा, तुम्हें गिट आता है, वो लोग पूछते हैं गिट ऑब्वियसली पूछते हैं वो लोग। वो इंटर्नशिप जैसी स्टार्ट होती है तो मेरे को तो याद है कि पर्सनली आगे वो लोग एक बार पूछते हैं कि गिट आता है कि नहीं आता, वरना वो वीडियोस देंगे वो सीखने के लिए हमेशा, अगर किसी को डाउट्स वगैरह तो। बट इट्स बेटर टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग अर्ली। यस ठीक है। सर और मेरे को अगर ओपन सोर्स में काम करना है तो सर मेरे को वेब व्यू में काम करना है या अलग से गिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी पे? गिट इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस का ये चीज़ शायद मेंशन करनी छूट गई होगी, ये हमने स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए बनाई थी। यहाँ पे एक होगा, स्लैक का लिंक भी डाल रखा है, पीपीटी के एंड में भी है, वो आता हूँ मैं उस चीज़ पे। हमारे पास में ना इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास में, यहाँ पे फोल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइज हैं, यहाँ जाके चेक कर सकते हो। बट हाउ टू कंट्रीब्यूट वाला सेक्शन है, हमने तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जाओ, अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो देखो जो गुड फर्स्ट इश्यूज लेबल वाली बात बताई थी वो यहाँ पे मेंशन करके रखी है। अगर तुम किसी सेशन को अटेंड नहीं करते तो यहाँ पे जाके देख सकते हो कोडिंग स्टाइल्स वगैरह क्या होता है, क्या यूजुअली फॉलो करना होता है। यूजुअली कि थोड़ा अच्छा कोड लिखो, रीडेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा नहीं होगा, वो देख सकते हो, वो क्लासेस है, वही सेम चीज़ है, थोड़ी चीज़ों को कंटेन रखो। अगर मैं अगर बैक बटन से रिलेटेड कुछ देखना चाह रहा हूँ तो वो नैव बार के अंदर नहीं होगा, नैव बार मतलब टॉप वाली बार के अंदर नहीं होगा, वो तुमने फाइल डाल रखी है किसी और चीज़ के अंदर, तुमने बुक मार्क के अंदर उसके चेंजेस डाल रखे हैं, तो वो मिलेगा नहीं, वो उसको उससे चेंज करना मुश्किल होगा। वो ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए चीज़, उसके लिए यहाँ देख लो एक बारी, यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए होगा। यहाँ पे हमने वीडियोज़ अटैच कर रखी हैं, ये है जनरल, अगर जो हमें वीडियोज़ वगैरह बाहर से मिली थी कि कैसे करना है, इंस्टॉल करना है गिट, इसको देख लो। यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करना है, यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड का लिंक आ रखा है। इफ़ यू वांट टू मेक योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, अभी तो हमने दिखा दिया बट मे बी यू डोंट रिमेंबर इट कि क्या हुआ था मीट के अंदर, तो हमने स्पेसिफिक टू आर रेपो यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इसमें हमने ट्राई किया कि जितना VS कोड के एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करना है तो बेटर रहेगा। और इस वाले में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अगर तुम्हें चाहिए हो कि अच्छा ये सारी चीज़ वर्क कैसे कर रही थी। बीच में एक दो चीज़ें होती है वर्जन कंट्रोल में जो थोड़ी स्किप हो जाती हैं। अगर तुम्हें रिसोर्सेज शेयर करने का मन है तो वी ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेटिव, वो क्या है, तुम गूगल फॉर्म भर सकते हो। गूगल फॉर्म भर दोगे, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगी। इसमें काफ़ी फैंसी चीज़ हमने करी थी कि रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, वो था वेब स्क्रैपिंग करी थी हमने। इस पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे अलग अलग जो चल रहे हैं। गेम डेव का चल रहा है, गेम डेव में अगर किसी को इंटरेस्ट होता है, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। अभी ये गेम बना रखी है, इसका डेमो पे आते हैं, प्रॉपर डेमो पे आते हैं। एक बारी चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर लो, पीपीटी में प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाना। काव्य, हाँ सर वेट, आई थिंक देयर इज अ इशू विद लाइव स्ट्रीम, दिख नहीं पा रहा होगा वहाँ पे। हाँ देख लो। चलो इसको ना लिख के रख लेना कि लाइव स्ट्रीम में ना इशू आ रहा था, बट मेरे को तो लग रहा है काफ़ी सही गया अभी तक का सेक्शन। गिटहब समझ आ चुका होगा, बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम अपने जो Yes, sir. प्रोजेक्ट्स करेंटली चल रहे हैं वो दिखा देते हैं एक बारी सभी को।
ये चीज़ें चल रही हैं, फिर अपने आप बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा वाला इंटरेस्टिंग लगता है, फिर हम बता सकते हैं, अभी गाइड कर पाएंगे, QA वाला सेक्शन चलेगा अभी। मैंने अजय को इनवाइट किया है, देखते हैं अगर वो अटेंड कर पाएगा सेशन तो, उसकी कोई मीट वगैरह चल रही थी, आएगा वो देखते हैं। GSOC वाली चीज़ मेन जो है, GSOC का थोड़ा ध्यान रख लो, GSOC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल समर ऑफ कोड, सॉर्ट ऑफ अ गूगल इंटर्नशिप अगेन। उसमें क्या है, उसकी एप्लीकेशन मार्च में शुरू होने वाली है, तो अभी सीखने को तुम्हें मिल जाएगा, रिसोर्सेज शेयर कर देंगे। अभी GSOC की सीरीज PPT पे आ जाने वाली। सर PPTs के ऐसे नहीं है, लाइक मैंने सोचा कि डायरेक्टली रेपो दिखा देते हैं सारी। डायरेक्टली रेपो से करना चाह रहे हो? एक सेकंड बस PPT दिखा सकते हैं, मैं GSOC सीरीज का दिखा देता ना, इफ पॉसिबल। दक्षा कॉल में